बच्चों, let's read out the question. In the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Assertion: the energy gap delta T is equal to 4/9 delta O. Reason: delta O is always greater than delta T for same metal ion and the ligand. Here we have two statements, assertion and the reason. In that we have to choose whether the assertion or the reason are the correct statements or incorrect one. If both are correct, then reason is the correct explanation of the assertion or not. And have a chance that is assertion is the correct one but reason is the incorrect. So let's talk about the key concept of this question. In that we have to take a key concept, that is the splitting energy diagram for octahedral cases and splitting energy diagram for tetrahedral case. So let's draw the octahedral case first. Delta O, splitting energy diagram. Energy diagram. So its diagram is like this. 1, 2, 3, 4, 5. Splitting take place. Sorry. 5 to 3. इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा ओ से यहाँ तक का डिफरेंस -2/5 डेल्टा ओ एंड फ्रॉम दैट +3/5 delta O. So here these orbitals having a naming, that is dxy, dyz, dxz, and for that dx square minus y square and dz square. So now let's draw the diagram for tetrahedral splitting energy diagram. Delta T, splitting energy diagram. In that, the diagram is like this. Here we have 3 orbitals and in ground state we have 2 orbitals. Here the difference is delta T, and from that the difference is -3/5 delta T, and here the distance is +2/5 delta T, and their orbital naming is, this is dx square minus y square, dz square, this is dxy, yz and dxz. So now, as we know here, the coordination number, I can, just a second, yes. Now, the coordination number is 6 for octahedral and 4 for tetrahedral. Now, as we know, crystal field splitting जो tetrahedral complexes की होती है वो 2/3 होती है octahedral complexes के. So यहाँ से delta T जो होगा वो हमारा 2/3 फॉर्म में आ जाएगा डेल्टा O के. अगर मैं डेल्टा O के 1 लिगेंड की बात करूं, 1 यानी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि 6 नंबर ऑफ लिगेंड्स जो होंगे वो हमारे मेटल आयन के साथ अटैच्ड हो सकते हैं. सो फॉर 1 लिगेंड डेल्टा O इज इक्वल टू डेल्टा O/6. अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ से हमारी जो डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2/3 इंटू डेल्टा O/6. अब बात करते हैं 4 लिगेंड्स की, क्योंकि हमें टेट्राहेड्रल का केस निकालना है. तो 4 लिगेंड्स के लिए क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा टी हो जाएगा ये यहाँ पर हमारा लिगेंड. डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 इंटू 2/3 इंटू डेल्टा O/6, 3 एंड 2. यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4/9 डेल्टा O. तो हमारा जो असर्शन था वो यही बोल रहा था कि एनर्जी गैप जो होता है डेल्टा टी का वो 4/9 होता है डेल्टा O के. सो यहाँ पे हमारा जो असर्शन है वो क्या है, करेक्ट है.
assertion is true. Move on to the reason. रीजन बोल रहा है कि ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो हमेशा ग्रेटर एनर्जी होती है उसकी डेल्टा टी से सेम मेटल आयन और लिगेंड के लिए. सो जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमारा ज्यादा एनर्जेटिकल फेवर जो होता है वो 6 बॉन्ड्स की वजह से होता है एज कंपेयर टू 4, जिसकी वजह से रिपल्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच के रिपल्शन को अवॉइड किया जा सके. तो यहाँ पर हमारा जो रीजन रहेगा वो ये रहेगा, द एनर्जी difference is due to energetically favors to form 6 bonds rather than bonds to avoid repulsion between electrons. To avoid repulsion between electrons. तो यहाँ पे क्या हो गया कि डेल्टा ओ जो है वो ग्रेटर है हमारा किससे, डेल्टा टी से, और यही हमारा क्या बोल रहा था, रीजन बोल रहा था. तो यहाँ पे हमारा रीजन भी क्या है, ट्रू है. बट क्या रीजन जो है वो हमारे असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. दैट इज both assertion and the reason is the true statement, but reason is not the correct explanation of the assertion. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.